Applications of Pi are important to create utility and real value in Pi ecosystem. Applications can be built by the core team or third-party developers. The platform is one of the major strategies of Pi core team to decentralize the development of Pi's ecosystem. तो फ्रेंड्स, ये थे पाई नेटवर्क के को-फाउंडर और इन्होंने जो इस वीडियो में बातें कही है, ये बातें सभी जीसीबी सपोर्टर को सुनना इसलिए जरूरी है और साथ ही जो लोग जीसीबी को सपोर्ट नहीं भी करते हैं उनको भी सुनना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो इन्होंने बात कही है, इन बातों को अगर आप गौर से सुन लेते हो तो आपको जीसीबी के रिगार्डिंग कोई भी किंतु परंतु यानी कि डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने इस वीडियो में जीसीबी के रिगार्डिंग पूरा एक्सप्लेन किया है और अगर आप इनकी बातें ध्यान से सुन लेते हो, समझ लेते हो तो आपको जीसीबी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इनकी बातें हम जरूर सुनेंगे, लेकिन बाद में उससे पहले आज के टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, जो कि है पाई नेटवर्क पैसिव इनकम। क्योंकि पाई नेटवर्क में पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अभी, क्योंकि पाई नेटवर्क का ओपन मेननेट अभी पूरी तरह से आया भी नहीं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आप पाई नेटवर्क का प्राइस पंपिंग के ऊपर पंपिंग देख सकते हो। तो आपके पास अभी एक बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी है, आप अपने क्रिप्टो अर्निंग को 1x से लेकर के 10x तक इंक्रीज कर सकते हो। और साथ ही जब पाई नेटवर्क अपना ओपन मेननेट पूरी तरह से लाइव कर देगा, उसके बाद भी आप अपने पाई कॉइन से एक बड़ा मंथली अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो लोग पाई नेटवर्क की माइनिंग करने से चूक गए हैं उनके पास अभी भी मौका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप सिंपल इसमें क्लिक करके आज से ही पाई की माइनिंग कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एक एक पाई बहुत ही महंगा होने वाला है। क्योंकि आप पिछले 4 दिनों का रिकॉर्ड देख सकते हो, जहां सभी क्रिप्टो करेंसी डंपिंग के ऊपर डंपिंग का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और उधर पाई नेटवर्क पंपिंग के ऊपर पंपिंग का रिकॉर्ड बनाता ही जा रहा है। और ये कहां जाकर के रुकेगा किसी को नहीं पता। और साथ ही जिन लोगों की केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है सबमिट, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक खुशखबरी है, क्योंकि पाई नेटवर्क ने केवाईसी ग्रेस पीरियड को और भी 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो इन 14 दिनों के अंदर आप अपने केवाईसी सबमिट कर दे, ताकि आप वर्ल्ड वाइड इससे बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बने रह सके। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था पैसिव इनकम की। सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने पाई की माइनिंग नहीं किया है, और जिन्होंने पाई की माइनिंग किया है फिर भी उनका कॉइन अभी लॉक है या फिर कुछ कॉइन अनलॉक है। तो ऐसे में आपका जो भी सिचुएशन हो, फिर भी आप एक अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जितना आप सहन कर सको, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना पूरा का पूरा लुटिया डुबो दे, कम से कम 1000 रुपया मतलब 1000, जिससे आपको नुकसान ना हो। तो आप कम से कम 1000 रुपया का पाई कॉइन किसी भी एक्सचेंज, चाहे बिटगेट हो या फिर OKX हो, अगर आपको इनमें अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही हो तो पाइनेक्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूं, आप सिंपल इसमें क्लिक करके आप अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हो। साथ ही आप इसमें 1000 रुपए का पाई कॉइन खरीद के छोड़ दे 3-4 साल के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो जब से पाई कॉइन लॉन्च हुआ है, पाई कॉइन का कैंडल ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसे में आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आपके पास चाहे कितना भी पाई कॉइन हो, आप 1000 रुपया यानी कि 5 या 6 पाई कॉइन आएगा, आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। और साथ ही मैं आपको बार बार ये कहूंगा, आप अपनी खुद की रिसर्च करें, मेरे कहने पे आप इन्वेस्ट ना करें। कल को आप ये ना कहे कि आपके वजह से तो हमारा नुकसान हो गया है। आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना नुकसान आप सह सको, लेकिन मेरी जितनी एनालिसिस है, आप इसमें 5-6 कॉइन खरीद के रख लें, क्योंकि फ्यूचर में ये आपको एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है। आप लोग कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे, जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मदर करेंसी है बिटकॉइन, वो लगातार डंपिंग के ऊपर डंपिंग होता जा रहा है और पाई कॉइन पंपिंग के ऊपर पंपिंग होता जा रहा है। और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि पाई कॉइन बहुत ही जल्द क्रिप्टो करेंसीज का मदर करेंसी बनने जा रहा है। तो इस बात से कौन कौन सहमत है? जो लोग सहमत है इस वीडियो को लाइक करें। और साथ ही पाई नेटवर्क जब अपना ओपन मेननेट पूरी तरह से लाइव कर देगा, तब भी आप बिना एक पाई कॉइन सेल किए एक बहुत बड़ा मंथली अर्निंग जनरेट कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि अपडेट निकल के सामने आ रहा है, पाई नेटवर्क अपना प्रो एक्सचेंज बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। और पाई नेटवर्क प्रो एक्सचेंज में पाई कॉइन
स्टेकिंग का भी ऑप्शन होगा। तो आप अगर अपने सभी पाई या फिर 90% तक पाई कॉइन स्टेकिंग पे लगा देते हो तो आप एक अच्छा खासा मंथली अर्निंग जनरेट कर सकते हो विदाउट सेल एनी पाई। अभी सुन लेते हैं पाई नेटवर्क को फाउंडर ने क्या कहा है, और इस बात को सभी पाइनियर्स सुने जो लोग जीसीबी को सपोर्ट करते हैं या फिर जीसीबी को सपोर्ट नहीं भी करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में पाई नेटवर्क को फाउंडर ने पूरा एक्सप्लेन किया है पाई नेटवर्क इकोसिस्टम कैसे काम करेगा। और बहुत सारे लोग जीडीपी के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे कि अगर पाई नेटवर्क जीसीबी प्राइस से लॉन्च होगा तो जीडीपी का क्या होगा। तो इस वीडियो में पाई नेटवर्क को फाउंडर ने आपके पूरे सवालों का जवाब दिया है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आपका भाई बैठा हुआ है, आप इस वीडियो में कमेंट रख सकते हो। तो फ्रेंड्स आइए सुनते हैं पाई नेटवर्क के को-फाउंडर्स को। Hi pioneers, welcome to the third session of the convention. This is a Pi speaker session with initially the Pi core team talking about updates and plans for the Pi apps platform and the courting apps, followed by a few videos from third-party developers showcasing their apps and ideas and how they would like to integrate with Pi. In the Pi core team's talk, first, we will give some high-level directions for Pi applications. Second, some product and tech updates and plans on the Pi platform. Third, we will discuss the potential apps that the Pi core team may build or guide building in the hope to hear what pioneers think about these apps. Now I'm going to talk about the importance of utility and direction of Pi applications. Applications of Pi are important to create utility and real value in Pi ecosystem. Applications can be built by the core team or third-party developers. The platform is one of the major strategies of Pi core team to decentralize the development of Pi's ecosystem and leverage the power of our global community to achieve the breadth and scale of traditional economies. For ecosystem building, there are two types of apps. First, apps with economic incentives or a business model for developers. And second, apps without a business model, but essential to the infrastructure and completion of the ecosystem. Now I'm going to talk about type 1 apps with business models. This type of apps mean that they can earn Pi from the business transactions inside their apps. For example, charges of Pi for facilitating a purchase for goods and services, or direct sales in Pi to pioneers. These apps make their own independent product, technology, and business decisions. What features or functionalities to include in the app, how much to charge. What we are looking for in this type of app are those that create real utilities of Pi, boost the usage of Pi, and contribute to the growth of the ecosystem. For example, apps that facilitate selling and purchasing goods and services, marketplaces, service exchange apps, apps that make direct sales of goods and virtual goods, or social applications, applications that charge subscriptions for content or services they provide. For initial apps, we would also consider lightweight apps, meaning that it is simple and easy to understand by most pioneers and have a simple integration mechanism into Pi. For example, fun games with in-app purchases, social apps or meme apps, influence apps in the realm of being transferable on the internet, while more heavyweight apps will be onboarded into the platform later. Heavyweight apps here refer to apps that, in addition to online exchange of value, also require physical world activities such as inventories, supply chains, and logistics. The reason for the order falls in line with our interactive design process, where the lightweight applications at first can help us debug any issues and make improvements in the online processes of how platform, apps, and pioneers interact with each other in terms of technical integrations, user experience, and economics. Before introducing and compounding these processes with physical world complications or coordinations required by the heavyweight applications. Now I'm going to talk about type 2 apps, ecosystem apps. This type of apps refer to they don't have business models, but are essential to the infrastructure of the Pi ecosystem. The purpose of such apps are to complete inefficiencies, facilitate growth of the ecosystem, and benefit the common good of the network. Such projects can be either developed by a specific third-party developer or led by the community or the core team through open source projects with crowdsourcing from the community. Some of these apps are not necessarily having a business model in Pi and will not
or should not be charged for service fees, should be free for the community, such as auditable open source KYC solution. The rewards for the contributions to such projects can be community-based through Pi donations from pioneers, bounty programs, or Pi crowdfunding. The core team will continue designing concrete mechanisms with inputs from the community to explore and implement ways to support this type of apps. To surface developers who will lead this type of apps. Due to the nature of the ecosystem apps, such apps, including its functionality, features, and in-app economics, will not only be decided by the leading developer, but will be guided by the Pi core team and community feedback to ensure it satisfies the needs of the ecosystem and are in line with the interests of the community. What is the core team's role in this type of apps? The types of apps mentioned above correlate with the depth of involvement by the core team. For type 1 apps with business model, the core team's involvement will include providing the platform along with its necessary technical support, for example, the SDK, API, and also evaluating and making the decision on whether they will be listed on the Pi platform, and keeping them always in line with Pi's policies and interests of the ecosystem. By contrast, the type 2 ecosystem apps without business models, in addition to the same things as type 1 apps, Pi core team's involvement will also include giving advice and guidance, designing mechanisms, and defining policies that incentivize these developers and facilitate such development, and when necessary, even mobilizing the community to support their development. What are the apps to avoid? Of course, in both types of applications, we want to avoid ingenuine apps that try to game the system, or apps that are not compliant with law or Pi's policies. For example, sham apps that do not really facilitate real goods and services transactions, but are in essence a channel for malicious people to scam pioneers for money or data, or speculative people to sell Pi for fiat or other cryptocurrencies, to organize unauthorized exchanges of Pi under the table, or to hoard Pi. These apps we want to avoid. We also want to stay away from any apps that will raise regulatory questions in some regions, for example, gambling apps or casino type of games. The procedure may involve evaluation by the core team, evaluation by the community committees, and continued monitoring and auditing by the larger community to ensure the compliance of law and Pi's policy, alignment of Pi Network's core values and strategies, and the benefits of the common good of the Pi community and more generally humanity. Next, we will have one of our core developers for the apps platform present tech and product updates and plans for the Pi apps platform.